आई की हिस्टोलॉजी आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 21 है इंदरबीर सिंह का। आईज की ये सारी लेयर्स जो हैं इनमें डिफरेंट तरह के कौन कौन से सेल्स होते हैं। दिस इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ये डिस्कशन जो है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आई की अरेंजमेंट इस तरह से है कि देयर इज़ एन आउटर कवरिंग विच इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव, तो उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि उसमें कौन से सेल्स हैं, कौन सी प्रोटीन्स हैं। फिर देयर इज़ अ मिडल लेयर विच इज़ काइंड ऑफ वैस्कुलर, और जो लास्ट लेयर है दैट इज़ न्यूरोनल। तो ये तीनों हमने लेयर्स आज डिस्कस करनी है। सो द आई, they are peripheral organs for vision, you know that already, and they are located in the bony orbit. Each eyeball is like a camera. It has a lens that produces images of objects that we look at. The images fall on a light receptive membrane, yeah, light sensitive membrane, which is known as the retina. So that's the neuronal layer which I call, because this is where the light rays fall and the image processing happens here. Cells in the retina convert the light images into nervous impulses that pass through the optic nerve, which is here and connected to the brain and other parts of the visual pathway. Ultimately it goes to the cerebral cortex ka visual region. It is in the cortex that the vision is actually perceived as an image. So जो भी चीज़ आप देख रहे होते हैं उसकी प्रोसेसिंग ऐसे है कि लाइट रेज यहाँ से आके रेटिना पे पड़नी है और रेटिना से वो प्रोसेस होके ऑप्टिक नर्व के जरिए दे विल गो टू द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन विच इज़ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, अब आई बॉल के अगर स्ट्रक्चर को हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो देयर इज एन आउटर फाइब्रस कोट जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया है. Then there is a middle coat which is largely vascular. It contains choroid, ciliary body and iris. And then there is an inner coat which is known as retina. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं the outermost जो है that is sclera and cornea. So sclera and cornea मिलके बनाते हैं outer coat. Then there is middle layer या middle coat which is actually vascular जिसमें choroid है. So there will be a lot of blood vessels in there. Then there are ciliary bodies. यही मिडिल कोट जो है सिलियरी बॉडी एंड ऑल्सो द आइरस. तो ये तीन चीज़ें आइरस, सिलियरी बॉडी एंड कॉर्वाइड मिलके बनाते हैं मिडिल लेयर. एंड देन देयर इज द लास्ट लेयर व्हिच इज द इनर मोस्ट लेयर नोन एज द रेटिना. द स्पेस बिटवीन द आइरस एंड द कॉर्निया, अब ये पॉइंट जरा गौर से सुने. हियर वी हैव द आइरस एंड हियर वी हैव द कॉर्निया. सो द स्पेस बिटवीन द टू इज नोन एज एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई. सो दैट बिट इज द एंटीरियर चैम्बर, while the space between the iris and the front of the lens is known as the posterior chamber. So iris and this is the posterior chamber. So iris divide करता है इस anterior part of the eye को into the anterior chamber and the posterior chamber. Okay, these chambers are filled with aqueous humor. और लेंस के पीछे की जो सारा लिक्विड है दिस इज विट्रस ह्यूमर. सो दैट्स जेली लाइक सब्सटेंस. इसको भी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में. So we will start discussion by starting the first layer, which is the outer layer, and it is composed of, I told you, sclera and cornea. So the outer wall of the eyeball is formed by a thick white opaque membrane, which is known as sclera. The sclera consists of the white fibrous tissue, which is basically collagen. Some elastic fibers and connective tissue, mainly the fibroblast, are also present. Some of these cells are also pigmented. Externally, the sclera is covered in its anterior part by the ocular conjunctiva and posteriorly by a facial sheath called the episclera. देखिए ये जो आंख में आप किसी की जब आइज देखते हैं, so that is the black bit, और ये जो white सारा portion है that is all the sclera. So the white of the eye is the sclera. The deep surface of the sclera is separated from the choroid by a choroidal space. So the sclera and choroid के बीच में there is a little perichoroidal space. Delicate connective tissue present in this space constitute the subarachnoid lamina or the lamina fusca. Basically जो मेनिंजीज थी आपको पता है ना, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर, पायामेटर, उस तरह की यहाँ अरेंजमेंट है कि देयर इज स्क्लेरा. स्क्लेरा के बाद देयर इज कॉर्वाइड लेयर, बीच में जो थोड़ी बहुत स्पेस है इज नोन एज द पेरिकॉर्वाइडल स्पेस. और उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम, इस स्पेस के कनेक्टिव टिश्यू का नाम है सुप्राकॉर्वाइड लैमिना. ओके, anteriorly the sclera becomes continuous with the cornea at the corneosclerar junction. A circular channel called the sinus venosus sclera, also known as the canal of Scam, is located in the sclera just behind the corneosclerar junction. ये नाम से जाहिर है word corneosclerar junction का मतलब होगा कि this is the sclera, this is the cornea, so the junction here will be known as corneosclerar junction. उसके बिल्कुल पीछे जो canal होगी that is the canal of Scam. Okay,
Now, the triangular mass of scleral tissue towards the cornea, just medial to the sinus, is known as scleral spur. Okay, किसी diagram में अगर दिखेगा तो I will show you the scleral spur. You see here, so that is the slight projection of the scleral tissue just behind the sinus venosus or the canal जिसके भी हम बात कर रहे थे. You see here, this is all sclera. This is all cornea, and obviously इनका जो junction होगा, that is known as corneoscleral junction. Okay. The optic nerve is attached to the back of the eyeball, a short distance medial to the posterior pole. Here, the sclera is perforated like a sieve, and the area is therefore known as lamina cribrosa. Cribrosa मतलब cribriform, छन्नी हो गया, ठीक है? उसमें से क्योंकि nerve निकल रही है, तो sclera में सुराख होते हैं. Bundles of optic nerve fibers pass through the perforations of lamina cribrosa. So optic nerve basically passes through it. Sclera का function चूंकि ये outermost layer है और अब तक आपको idea हो गया होगा कि it is fibrous tissue. So it is kind of protective in nature. The sclera collectively forms fibrous tunic of the eyeball and provides protection to delicate structures within the eye. So that's the job of sclera. It also resists intraocular pressure and maintains the shape of the eyeball because it's a hard covering, so it does not allow the eyeball to expand unnecessarily. Its smooth muscle surface allows eye movements, attachment basically. ये जो sclera है, इस पर काफ़ी सारे muscles attach होते हैं, so eyeball की movement में help करता है. The sclera also provide attachment to the muscles, so all important points. Function mainly बहरहाल sclera का है protection. Okay. अब नेचर ने देखें कितना ब्यूटीफुल सिस्टम रखा है कि स्क्लेरा बिल्कुल फ्रंट ऑफ द आई पे जाके ट्रांसपेरेंट हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर में, विच इज़ नाउ नोन एज कॉर्निया. अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये भी वाइट ओपेक होता, तो आप देखते कैसे है, लाइट कैसे पास होती. लाइट पास होने के लिए यहाँ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर का होना तो ज़रूरी है ना, एंड दैट ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्निया. In the anterior 1/6 of the eyeball, sclera is replaced by a transparent disc-like structure called cornea, which is convex forward, ऐसे बाहर की तरफ. It is colorless and avascular, but has a very rich nerve supply. इसीलिए आंख में कोई कचरा वगैरह चला जाता है तो फौरन से इरिटेशन होती है. कॉर्निया की जो एपिथेलियम है उसकी आउटरमोस्ट लेयर is non-keratinide लेकिन squamous epithelium. The cells in the deepest layer of the epithelium are columnar. In the middle layers are polygonal. और ये सारे आपको याद होना ज़रूरी हैं because we are studying histology here, right? The cells are arranged with great regularity. और ये बहुत ज़रूरी है. Irregular होंगे तो light pass नहीं होगी. With the electron microscopy, the cells on the superficial surface of the epithelium show projections either in the form of microvilli or folds of plasma membrane. These folds are believed to play an important role in retaining the film of fluid over the surface of the cornea so that the light passes okay and there is no friction. The corneal epithelium generates rapidly after damage. So it has huge regenerative capacity. Okay? अब कुछ terminologies हैं जो आपको पता होनी चाहिए. Bowman membrane. The corneal epithelium rests on the anterior limiting lamina, also known as the Bowman. So जो epithelium की settling membrane है उसका नाम है Bowman membrane. Okay? Corneal stroma. Most of the thickness of the cornea is formed by the substantia propria. The substantia propria या इसका दूसरा नाम है corneal stroma. It is made up largely of collagen type 1. Okay? Also embedded and have some other structures such as glycosaminoglycans. They are arranged with great regularity. ये word बार-बार use हो रहा है, and form lamella so that it's a very transparent structure. The transparency of cornea is due to regular arrangement of the fiber. अगर irregular arrangement fiber की होती तो transparency नहीं होती, light pass नहीं हो सकती. The fibroblasts are present in substantia propria, यानी corneal stroma. They appear to be flattened in vertical section through the cornea. ये सारी details ना भी याद रहे तो that's fine. लेकिन these are known as keratocytes or corneal corpuscles. So इस cells का पता होना चाहिए. So there is a basement membrane type thing, Bowman membrane, then there is corneal stroma, then there are cells, keratocytes, and now another membrane, the descent membrane. Deep to substantia propria, there is thin homogeneous layer, which is the posterior limiting lamina descent membrane. It's a true basement membrane basically, okay? So जिस तरह बाकी cells में होती है basement membrane, यहाँ भी है, उसका नाम अलग है. At the margin of the cornea, the posterior limiting membrane becomes continuous with the fibers that form a network in the angle between the cornea and the iris, the iridocorneal angle. The space between the fibers of this network are space of the iridocorneal angle. Some of the fibers of the network onto, so this is not something which I would recommend you remembering. Then the endothelium, the posterior surface of the cornea, is lined by a single layer of flattened cells that constitute the
endothelium of the anterior chamber. So remember what was anterior chamber? That's the anterior chamber in front of the iris. तो हम inner layer की यहाँ बात कर रहे हैं endothelial cells की. Okay. The endothelial cells are adapted for transport of ions. They possess numerous mitochondria because transport के लिए आपको obviously energy चाहिए. So you have a lot of mitochondria there. They are united to neighboring cells by desmosomes. These are the kind of junctions they have, as well as occluding junctions. So they are closely, tightly bound to each other. The cells pump out excessive fluid from the cornea, and ये fluid बाहर निकालना ज़रूरी है ताकि transparency maintained रहे. Okay? ये कॉर्निया की लेयर्स हैं. सो इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. ये इस तरह से पूरे कॉर्निया का सेक्शन आपके सामने है. आउटर मोस्ट लेयर 2, 3, 4, 5. अभी जितने स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं वो सारे यहाँ हिस्टोलॉजिकली आपके सामने. सो द फर्स्ट लेयर इज़ द नॉन कैरेटनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस. सो नॉन कैरेटनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस लेयर, दैट इज लेयर नंबर 1, द आउटर मोस्ट लेयर. Then there is corneal epithelium resting on the Bowman's membrane. So that is Bowman's membrane. Okay, right? Then we have substantia propria. This is the stroma, all corneal stroma. Then there is the true basement membrane, which is also known as Desmond's membrane. And then there are posterior cuboidal cells. So these are the posterior cuboidal cells. So all this is basically different parts of cornea. So this is an important diagram and easily represented all these 5 layers. 1, 2, 3, 4 and 5 जिनके बारे में अभी हमने यहाँ टेक्स्ट पढ़ा. ठीक है? Now let's talk about the vascular cord. Vascular cord को collectively हम UVA. So there are 3 cords basically. अगर आप eyeball की बात करें, so there is outer cord, which is composed of sclera, and it is also composed of cornea. ठीक हो गया. Then there is vascular cord. Vascular cord में 3 चीज़ें हैं. So there is choroid, there is iris. ये मैं आपको स्टार्ट में इस वीडियो के बता चुका हूँ, so I'm just repeating. So there is choroid, there is iris, and there is ciliary body. ये 3 चीज़ें मिलके बनाते हैं the vascular cord. Okay? और vascular cord का दूसरा नाम क्या है? Uvea. Now ये जो vascular cord है, it is deep to the sclera, and it is also known as uvea. It is composed of 3 structures: choroid, ciliary body, and iris. ठीक है? तो one by one करके इनको पढ़ते हैं. Number 1 is the choroid. It contains choroid proper, suprachoroid lamina, which separates the choroid from the sclera basically. So the outermost layer is sclera. उसके नीचे जो choroid है, so बीच में there is a lamina, which is called suprachoroid lamina, and then there is basal lamina, which intervenes between the choroid proper and the retina. So inner side पे retina से उसको separate करता है. So this layer is basically, अगर आप diagram यहाँ देखें, so here we have got the choroid. ये outer layer है sclera और ये inner layer है retina. So choroid और sclera के बीच में जो membranous connection है, that is suprachoroid lamina. एंड देन choroid और रेटिना के बीच में ये जो येलो मेम्ब्रेनस कनेक्शन दिख रहा है, दैट इज बेसल लैमिना. और बीच में ये जो पूरा choroid है, दिस इज कॉल्ड choroid proper. ठीक है? The choroid proper consists of a network of blood vessels supported by connective tissue in which many pigmented cells are present, giving the choroid a very dark color. This color darkness darkens the interior of the eyeball. The pigment also prevents reflection of the light within the eyeball. So that's kind of an important arrangement for proper optics. Both these factors help in formation of very sharp images on the retina. Okay, so again you look here, there are a lot of blood vessels, there are pigments, there are connective tissue. It's a dark layered structure. The choroid proper is made of an outer vascular lamina containing small arteries and veins, and then there is choroidal stroma. So बहरहाल ये हर जगह ऐसे ही होता है. There are some cells, there is some stromal tissue. This is an important diagram showing 3 layers: sclera, choroid, and retina. Okay, अब जो suprachoroid lamina है, मैंने आपको बताया, it's between the choroid and the sclera. Here it is. Okay, so it is also known as lamina fusca. It's made up of connective tissue containing largely collagen fiber, elastin fibers. Histology में आपको location के साथ साथ उनकी composition भी याद रखनी होती है कि उसमें है क्या, कौन से cells हैं. Then there is basal lamina, which is between the choroid and the retina, and this basal lamina, which is also known as membrane of Birch, appears to be homogeneous layer. However, with the electron microscopy, is seen to have a middle layer of elastic fibers. So mostly elastic fibers there, and it provides a smooth surface on which the pigment cells and receptors of the retina can be arranged in a precise orientation. So it's a very smooth layer, and you see there are the cells from the retina attaching on this membrane. So it gives like a very smooth platform.
Then another component, component number 2 I would say for the uvea या जो vascular layer है, that is called the ciliary body, and the third component is the iris. ठीक है, iris जो है, it is the most anterior part of the vascular cord of the eyeball. It forms a diaphragm placed immediately in front of the lens, और इसके बीच में जो अपर्चर है that is called pupil. So pupil बड़ा होगा तो light ज़्यादा enter होगी, pupil छोटा होगा, so you see here this aperture is known as pupil, और ये जो diaphragm है it is known as iris. So dark जब होता है रात का वक्त तो हमारा pupil काफ़ी बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा light enter हो सके. The iris is composed of stroma of connective tissue containing a lot of pigment cells which are embedded in the blood vessels as well as the smooth muscles. Some smooth muscles are arranged circularly and they are present around the pupil and constricted. They are known as sphincter pupillae. अच्छा, some of them run radially, वो radial move करते हैं इस तरह से, and these are dilator. तो जब ये contract होंगे तो pupil बड़ा हो जाएगा, and these are called dilator pupillae. The posterior surface of the iris is lined by the double layer of epithelium continuous with that of the ciliary body, which अभी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में. The cells of this epithelium are deeply pigmented, so highly colored. Okay. Ciliary body क्या है? They represent the anterior continuation of the choroid. तो जहाँ choroid खत्म हो रहा है थोड़ा सा वो आगे और further जब continue करता है, so that's the choroid layer. और ये choroid layer की जो continuation है towards the iris, this is known as ciliary body. Okay. एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किधर है और उसकी सेलुलर कंपोजिशन क्या है. द सिलियरी बॉडी इज मेड अप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज मसल्स. द मसल कॉम्पोनेंट आर द सिलियारिस मसल. द सिलियारिस मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल्ट्रेशन इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस. सो जो आइरस है इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. प्यूपिल छोटा है या प्यूपिल बड़ा है, तो इसके जो मसल्स हैं दैट इज स्फिंक्टर एंड डायलेटर प्यूपिली. और जो सिलियारिस मसल है इट इज लेंस इस तरह है या लेंस इस तरह है. नियर विजन के लिए लेंस को आपको ऐसे राउंड करना होगा ताकि आप नियर विजन पे फोकस कर सकें, एंड फार विजन के लिए आपको लेंस को इलोंगेट करना होगा, और ये मसल होता है जो ये एक्शन करता है, दैट इज द सिलियारिस मसल. सो इट इनेबल्स द आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट वेरिंग डिस्टेंसेस. नज़दीक देखना है तो गोल मटोल हो जाता है, और दूर कोई चीज़ देखनी है तो लेंस ऐसे हो जाता है. The inner surface of the ciliary body is lined by a double-layered epithelium. The outer cell layer is pigmented. The cell, आप देख रहे हैं यहाँ ज़्यादातर जो सेल हैं vascular area में, they are pigmented. The anterior part of the inner surface of the ciliary body has short processes towards the lens known as the ciliary processes. They are supposed to kind of hang over to the lens because मैंने आपको भी बताया कि ciliary body का one of the primary function is to alter the गोलाई of the lens. तो लेंस के साथ अटैच होंगे कुछ फाइबर्स, तभी तो गोलाई को छोटा मोटा करेंगे, है ना. दैट मेक्स परफेक्ट सेंस. तो दो लेयर्स मैंने आपको बता दी. द फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर, वाज द वन विच कंटेन्स स्क्लेरा, ऑल्सो द कॉर्निया. द सेकेंड लेयर वाज द वैस्कुलर लेयर जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स थे, कॉरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस. एंड नाउ द थर्ड लेयर which is the neuronal layer, and that is known as retina. Now retina is a very important layer because retina ही की वजह से we visualize things, है ना. This is the innermost cord of the eyeball and it lies in the posterior 3/4 of the surface. So अगर हम eye का structure ऐसे draw करें, so ये posterior 3/4 structure यहाँ होती है retina. Okay, it contains photoreceptors, which means it receives light. तो जो भी लाइट रिसेप्शन है उसके जो सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ये 2 तरह के सेल्स हैं, ये रेटिना में होते हैं, एंड दे आर एसेंशियल फॉर विजन. रेटिना हैज ए स्पेशलाइज्ड एरिया वेयर विजन इज मोस्ट एक्यूट कॉल्ड द फोविया सेंट्रालिस और मैक्यूला. दिस एरिया कंटेन्स ओनली कोन्स विच आर एसेंशियली बेयर. The overlying layers are pushed to the side, so basically rich in cones. Okay. The retina also has a blind spot जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, और इस एरिया पर कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते. देयर आर नो फोटोरिसेप्टर्स देयर. अब अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो रेटिना ऑब्वियसली इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. देखें, इसका काम है लाइट रेस को रिसीव करना. आपकी बॉडी में नेचर ने एक कैमरा पूरा इंस्टॉल किया हुआ है. सो यू हैव अ लेंस जिसकी मैग्निफिकेशन लाइक ज़बरदस्त है. नो मोबाइल फोन कैमरा कैन एक्चुअली मैच इट, यू नो. इतना हैवी मेगापिक्सल इमेज आपका है. सो यू सी इमेजेस विद सो शार्पनेस एंड ब्राइटनेस के उसका कोई नैमुल बदल नहीं है. सो यू हैव अ ब्यूटीफुल सिस्टम, और उस ब्यूटीफुल सिस्टम को एक्यूरेट करने के लिए देयर आर सो मेनी सेल्स विच आर यूज्ड. सो रेटिना का जो स्ट्रक्चर है इट्स एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. लेकिन और काफ़ी स्टूडेंट इससे परेशान भी होते हैं. लेकिन आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा. सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है
कि layers of retina, I mean there is no way you can forget it because एग्जाम में ये लाजमी पूछते हैं. So the outermost layer is the pigment layer, और ये pigment layer रेस्ट करती है इसके ऊपर. यहाँ कौन सी मेम्ब्रेन होगी? There will be choroid, और ये choroid का जो laminar membrane है उस पर ये रेस्ट करते हैं pigment cells. So that's the outermost layer. Then there is a layer of rods and cones. You see there are rods and cones in there, and then there are external limiting membrane, then there is external nuclear layer, then external plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, layer of ganglion cells, and layer of optic nerve fibers, and then there is an internal limiting membrane. So between the internal and external limiting membrane there are so many different cell types, and then there is the vitreous humor. So ये जो सारे cell types हैं, ये जो सारी different तरह की layers हैं, That's a must for you to remember. अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना आपने पढ़ा ही नहीं. एग्जाम में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं. सो वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज टेल अस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ रेटिना. ओके, so when we examine sections through retina, a number of layers can be distinguished, and these layers are named here, starting from pigment cell layer. It is the outermost layer of the retina which is separated from the choroid by the brush membrane. ये हमने पहले भी बात की थी. There will be the brush membrane from the choroid, and this pigment layer is usually cuboidal cells, and process from the pigment cells extend into the next layer. You see these are villi-like projections. So pigment layer is the first layer. Then you see layer of rods and cones, and the rods are processes of rod cells, and the cones are processes of cone cells. So you see these are the processes, cone and the rod. ये पूरा cell है लेकिन इसका एक portion जो है वो इस layer में मौजूद है, तो इस layer का नाम पड़ गया layer of rods and cones. Then there is external nuclear layer which contains the cell bodies and nuclei of the rods and cone cells. So ये nuclei आप देख रहे हैं और पूरी cell body है rods and cones की. These cells are the main, they are the primary photoreceptors, so they basically receive the light. ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए. Then there is external plexiform layer, and it consists only of the nerve fiber that form the plexus. Then inner nuclear layer, इसमें बहुत सारे cells हैं. There are bipolar cells, horizontal cells, emicrine cells, and then we have the inner plexiform layer, a layer of ganglion cells containing bipolar ganglion cells, and then the layer of the optic nerve fibers which contain fibers जो आपस में मिलकर ultimately optic nerve बना देंगे, ये वाली layer. ठीक है, तो layers के नाम बस अगर आपको पता है then you have done a substantial job, and that's what is required. Now appearance of retina in sections, this is the repetition of what we just did. बात यहाँ पे ये हो रही है कि different layers आपको नजर आती हैं when you do a section through retina. ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है ब्लड रेटिना बैरियर. इसमें बता ये रहे हैं कि देखो रेटिना में इफ दिस इज रेटिना और उसके बाहर सपोज ये कोरॉइड है, तो रेटिना में भी कुछ ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं, लेकिन वो ब्लड वेसल्स डू नॉट सप्लाई द रॉड्स एंड कोन्स. इनफैक्ट द रॉड्स एंड कोन्स आर सप्लाइड बाय द डिफ्यूजन फ्रॉम द कोरॉइड वेसल, क्योंकि ये जो रेटिना के अंदर से अपनी जो ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं उनमें जो सेल्स हैं दे हैव प्रीटी टाइट जंक्शंस विद ईच अदर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्लड रेटिना बैरियर. आपने ब्लड ब्रेन बैरियर का नाम सुना है, आपने ब्लड टेस्टिस बैरियर का नाम सुना है. नाउ इज द ब्लड रेटिना बैरियर. ओके, अब इन्होंने कुछ सेल्स की डिटेल्स बताई हैं. टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट हाई यील्ड, बट इसको एक दफ़ा सुन लें. पिगमेंट सेल्स कहाँ थे? यू रिमेंबर दिस वाज द पिगमेंट सेल लेयर. दीज आर ऑल द पिगमेंट सेल्स. इनकी थोड़े से फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए. दे अपीयर टू बी रेक्टेंगुलर, दे आर बेसिकली क्यूबॉइडल सेल्स. The nucleus is basal, which is towards the brush membrane. The pigment in the cytoplasm is melanin pigment. With the electron microscopy, it can be seen that the surface of the cell shows microvilli as well. You can actually see the microvilli here. You see these little projections, they have microvilli. So these are important features that you need to remember. Okay, you look at this diagram. The first layer, this is ये पूरा eyeball का क्रॉस है. सो दिस इज द स्क्लेरा, दिस इज द कोरॉइड. ये कोरॉइड की ब्रश मेम्ब्रेन, और ब्रश मेम्ब्रेन पर कौन से सेल्स लगे हुए हैं? दीज आर द पिगमेंट सेल्स. एंड देन देयर इज द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स इन द आउटर न्यूक्लियर लेयर एंड द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर एंड देन द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर. सो ऑल दीज आर सेलुलरली डिफाइंड हियर. ओके, राइट. रॉड्स एंड कोन्स के बारे में a little bit of cellular details. There are about 7 million cones in each retina. So you are a millionaire there. The rods are far more numerous. इससे भी ज़्यादा होते हैं, सोचें ज़रा.
They number more than 100 million. Oh my god, this is rods more than 100 million. The cones respond best to the bright light, phototopic vision. यानी bright light में ज़्यादा काम करते हैं. They're responsible for sharp vision and for discrimination of the color. So that's the job of the cones. And rods, they respond better in poor light, जिसको हम कहते हैं scotopic vision, and especially movement across the field of vision. So color, sharp images, cones. Okay. Each rod is about 50 micrometer in length, but this is not important detail to remember. Okay. Ultra structure. The ultra structure of rods and cone cell is similar and is therefore considered together. So almost all the features are same. Each rod or cone cell consists of a cell body. Neuron ki tarah, there will be a cell body in the center with a nucleus in there. Okay. And there is an internal and external processes. You see there is an outer fiber, there is an inner fiber. The part of the cone cells are almost same except for the terminal part, which is called pedicel, and instead of sphereole. Abhi मैं बताता हूँ what do we mean. So if you look at the cone and rod, इनमें the only differentiating feature जो the outside नजर आता है, और दोनों में ही cell body है. They have cell body. There is a process in this direction. There is a process in this direction, and the terminal portion of the cone is in this shape. पाँव की शक्ल में called pedicel, and here it is in a spherical shape. दो ऐसे या sometimes तीन outpocketing बने होते हैं. These are called spherules. So spherules are present in rods and pedicels are present in cones. The cell body gives off two fibers, the inner and the outer fiber. The outer fiber passes अब ये इससे ज़्यादा डिटेल नहीं. So there is an outer segment and then there is an inner segment. That's it. Outer segment goes towards the outer parts of the layer of the eye, and the inner segment goes towards the deeper retinal layers. Okay. The outer segment of the rods and cones contain photosensitive pigments and are concerned with the conversion of light into nerve impulses. So ये वाला जो portion है, the outer portion, because it is की location अगर आप देखें, so it is well suited for perceiving light. You see, यहाँ पे sclera और फिर इसके ऊपर cornea और ये सब इस तरह है ना. So these are well suited for perceiving light. So ये वाला जो portion है, they perceive light. इनका काम है light को receive करना. Okay, और ये light signals को फिर convert करते हैं into neuronal signals, nerve impulses. The pigments are believed to be bound to the membrane of the sacs of the outer segment. Irrelevant statement. The pigment in the rods is known as rhodopsin, and that in the cone is known as iodopsin. अक्सर बच्चे पूछते हैं इसको codopsin क्यों नहीं बोलते, कौन से है? तो बहरहाल that's how medicine works. Cones are believed to be of three types. They are red sensitive, green sensitive, and blue sensitive. Iodopsin has therefore existed in three different forms for each color. However, primary colors हैं ये, ठीक है? However, the three types of cones cannot be distinguished from one another just based on their microscopy. पता नहीं चलता, okay? कि कौन सा blue color के लिए है, कौन सा red के लिए है, कौन सा green के लिए है. The inner segment of the rod and the cone process is wider than the outer segment. ये inner segment ये वाला है जो अंदर की तरफ आ रहा है deeper layers में, ठीक है? At the junction of the inner and the outer segment, this is not important line, so I would just skip. The cell bodies of the rod and cone show no particular peculiarity. Okay, the inner fiber. So I would not go into these details. That's fine. So just remember that's how these cells are arranged. इससे ज़्यादा डिटेल ना पूछी जाती है ना आपको याद रखनी है. Okay, right. Obviously जो terminal part है ये spherule है, तो ये कौन सा cell होगा? That will be rods. और ये cone है इसलिए ये pedicel है. So you see the arrangement of pedicel, and the neurons are, so it's just like a neuron. So rod and cone जो हैं वो neuron की तरह they are making synapse, है ना? तो ये स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं. बाकी जब हम स्पेशल सेंसेस की फिजियोलॉजी करेंगे तब बताऊंगा यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एक्चुअली कैसे होती है. क्लिनिकली इंपॉर्टेंट स्टफ. रेटिनल डिटैचमेंट इज द सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम द इनर ऑफ द आई बॉल. इट मे अकर स्पॉन्टेनियसली. कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, या सर पे किसी ने जोर से मुक्का मार दिया, सो रेटिना कैन डिटैच, and that's not something uncommon. There are three pathogenic mechanisms. Number one is the pathologic process in the vitreous on the anterior segment. Collection of the serous fluid is not important right now. Retinitis pigmentosa is a group of systemic and ocular disorders of unknown etiology characterized by degeneration of retinal pigment epithelium. So the person goes towards blindness and ultimately to total blindness. Okay. Retinoblastoma is a tumor. It's actually the most common malignant tumor in children. It may be present at birth or recognized early childhood up till about the age of 4 years. About 60% of the retinoblastoma are sporadic and remaining 40% are familial.
स्पोरेडिक मतलब इनका जेनेटिकली कोई मेजर लिंक नहीं है फैमिलियल हिस्ट्री के साथ, जबकि दीज आर द वंस विच ट्रांसपोर्टेड इन द फैमिली फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. सो अगर पेरेंट्स में या सिबलिंग्स में किसी की म्यूटेशन है, सो देयर आर चांसेस कि देयर विल बी रेटिनोब्लास्टोमा इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. Familial tumors are often multiple and multifocal and transmitted as an autosomal dominant trait. Retinoblastoma, well, this is not important right now. Pathology में हमने पढ़ना है वैसे भी काफ़ी डिटेल में. So the point here is, रेटिना में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लेयर्स के नाम. ये एग्जाम में हमेशा पूछते हैं. सो अगर मुझे आई से हिस्टोलॉजी से कोई एक सवाल करना है ना, so that will be my question कि do you know different layers and different cell types present in retina. अब लेंस तो आई मीन टोटली अ मास्टरपीस जो हमारी आंख में है. इट्स अ ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स एवास्कुलर स्ट्रक्चर, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. इट इज सस्पेंडेड बिटवीन द आइरिस एंड द विट्रस. ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं. और इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. देयर इज अ आउटर कवरिंग कॉल्ड द लेंस कैप्सूल, देन देयर इज अ एपिथेलियम ऑफ द लेंस एंड देन द सब्सटेंस ऑफ द लेंस. सो इफ यू सी दिस इज द सेक्शन थ्रू योर लेंस, we have the capsule, then there is an epithelial covering, and then there is the lens fiber, which is the main substance of the lens. The lens capsule is transparent. It has to be transparent क्योंकि इसमें से लाइट गुजरनी है. As a high elastic collagenous membrane, basement membrane है इसके पास, which is highly elastic collagenous. It is made up mainly of type 4 collagen and also some glycoproteins. The capsule is thicker in front than the behind. It is secreted by the lens epithelium. So the capsule covering है उसके पीछे ये beautiful pink cells. Okay. Deep to the capsule of the lens is covered on its anterior surface by the lens epithelium. The cells of the epithelium are cuboidal in shape, and you can see that these are almost cuboidal or slightly columnar. However, towards the periphery of the cell, they become longer. They look like columnar more than cuboidal. Ultimately, they are converted into long fibers that form the substance of the lens. So you see these, ये भी इन्हीं सेल से बने हुए हैं जो लेंस फाइबर्स हैं. तो ये देखो किस तरह से ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू दीज लॉन्ग फाइबर्स, है ना. The cells of the epithelium are metabolically very active. They contain sodium, potassium, ATPases and generate ATP to meet the energy demands of the cells. The cells show high mitotic activity, जिसका मतलब है they also keep dividing. The lens epithelial cells continue to divide and develop into lens fibers. So जो lens के fibers हैं वो इन्हीं cells की division से बन रहे हैं. और जो lens fibers हैं यहाँ पे भी ये लाइन लिखी हुई है, they develop from the lens epithelial cells. They are mainly composed of soluble proteins, crystallins. The fibers formed earlier in the deeper plane, the newer ones occupy more superficial plane. जैसे जैसे बनते जाते हैं वो deeper होते जाते हैं. Obviously, that's a common sense thing. When the lens is examined from the front or from the behind, 3 faint lines are seen radiating at the center, from the center to the periphery. Not important, but they are called sutural lines. So there are 3 embryologically different parts which then combine together, but of not great importance in adult histology. But obviously ये आपको अगर नहीं पता, then you are missing an important story. You need to know what is capsule. They are made from these epithelial cells. और ये जो epithelial cell है ये ना सिर्फ capsule बना रहे हैं बल्कि they are also making the lens fibers. Okay. Cataract का मतलब ये है opacification in the lens. तो डायबिटीज़ में भी जैसे for example बहुत common है और बहुत सारी diseases में कि because of some metabolic changes there is an opacity in the lens so the person cannot see. That is what is known as cataract, या आम ज़बान में मोतिया हम उसको कहते हैं. मैं लेंस का अपने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि दैट्स अ मास्टरपीस एंड ट्रूली इट्स अ मास्टरपीस. आई मीन इस वक्त आप फ़ोन यूज़ करते हो ना, आप आईफोन यूज़ करते होगे, सैमसंग यूज़ करते होगे या कोई और फ़ोन यूज़ करते होगे. अब आपने देखा है कि फ़ोटो खींचना कितना ईजी हो गया है बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे कैमरा लगे हुए हैं. फ्रंट कैमरा भी हैं, बैक कैमरा भी हैं, 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं एक फ़ोन के अंदर. तो नेचर ने आपको कितना खूबसूरत कैमरा दिया है. देखें आपकी आइज़ और उसमें जो लेंस है उसको मैच करने वाली आज तक कोई आर्टिफिशियल लेंस किसी मोबाइल में बनी नहीं है ना. Now, accessory visual organs, these are the organs which are present around side the eye. आंखों के आसपास मौजूद हैं. मेन इनका काम विजन से लिंक नहीं है, बट anyways they are important support staff. और support staff के बगैर कोई भी इवेंट होता नहीं है. सो इनका थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं. Eyelids for example. There are 2 movable skin fold, upper and lower eyelids. Anteriorly, आंखें जो मतलब ये अगर आपकी eyes हैं तो ये upper eyelid होगी, ये lower eyelid होगी. Anteriorly there is a skin and posteriorly they are covered with conjunctiva. ठीक है ना. तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. Skeleton of eyelid is known as tarsal plate. ये मैंने स्ट्रक्चर बताया वो भी एनाटमी में, सो यहाँ we don't have to worry about it. There are modified sweat glands called the ciliary glands.
which are present in the lid near the free edge. So there are sweat glands present, and there are also some other glands such as the glands of Z's. Okay, the inner surface is lined with conjunctiva. ठीक हो गया जी. Stye or hordeum is an acute suppurative inflammation of the sebaceous gland of Zeiss. तो दाना बन जाता है आंख में basically. Eyelids पे दाना बन जाता है because the glands are blocked because of inflammation. That is known as stye or hordeolum. Chalazion is a very common lesion and is the chronic inflammatory process involving the meibomian glands. It occurs as a result of obstruction to drainage of the secretions. Again, ये pathology में जब हम ophthalmology करेंगे तो बात करेंगे. So eyelids are important support staff to the eye. Then there is conjunctiva. Conjunctiva is a thin transparent membrane that covers the inner surface of each eyelid. और आईलिड को अगर आप ऐसे कभी उठा के थोड़ा सा देखें तो अंदर जो कवरिंग होगी ट्रांसपेरेंसी, दैट इज पल्पेब्रल कंजक्टिवा. और स्क्लेरा जो यहाँ पे आई का वाइट दिख रहा है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ocular conjunctiva. Okay, so that is basically also providing a smooth surface ताकि आई की जो मूवमेंट है वो ठीक ठाक हो. Then there are lacrimal glands. ये tubuloalveolar glands हैं which are present alongside the eyes, और इनका काम है to produce लिक्विड विच इज नोन एज टीयर. आंसू बनते हैं इसमें. ठीक है, बाज़ लोगों को रोने की बहुत ही आदत होती है, हर बात पे रोते हैं. कोई ड्रामा सीरियल भी देख रहे हैं तो रो रहा है. सो उनके जो lacrimal glands हैं, they are highly active. Sections of the lacrimal gland can be distinguished from those of the serous salivary gland because of these features. The acini are larger and have wider lamina. Not important, I would say. Not high yields. Nobody asks you to differentiate between these two types of cellular architectures. Okay, so that's it basically. यहाँ what they are telling you is some additional information कि density of rods and cone, ये actually हम सारे कर चुके हैं. ये important भी नहीं है कि 1.5 million per millimeter square. These numbers, I mean किसी को impress करने के लिए आपको ये numbers याद करने तो कर लो. Histology understand करने के लिए it's not super important. ये सारे numbers के 5,000, 1.5 million, no, not at all important. Okay, यहाँ ये जो discussion चल रही है, these are synaptic connections of rods and cones. That we will cover in neurophysiology और special senses की जब physiology करेंगे. तो basically that's all about the structure of eye. 3 layers हैं. Vascular cord is the middle one. उसके बाहर एक तरफ there is outer sclera, and the inner one is the retina. Okay, so all the very best, and I hope that you are doing well in your studies for your MBBS. Keep sharing your knowledge, keep sharing these videos with your colleagues. They are free of charge. They don't charge you anything, because my motto at Dr. Asif Lectures and at this particular channel is hashtag free education, free medical education, and hashtag invest in youngsters. So I'm trying to transfer my skills and knowledge to the next generation. You keep doing the same. All the very best.